महंगाई कम होनी चाहिए ताकि गरीब लोग भी पेट भर सके अपना। महंगाई बढ़ गई है ना, महंगाई बढ़ी है, कमाई घटी है। इतनी महंगाई में के गरीब मानस अपने बच्चे पाल सके हैं। चीनी 50 रुपये किलो हो गई, आटा 20 रुपये किलो हो गया, चावल 25-30 रुपये किलो हो गया। पब्लिक कैसे जिएगी? These are few of the thousands of people who are badly hit by the steep rise in the prices of essential commodities like food grains, pulses, edible oil and vegetables. आज का 9 साल पहले जो मैंने 8 रुपये 9 रुपये जो आटा लेते थे, चावल लेते थे, तो आज मुझे 16 रुपये मिल रहा है। अब इतनी महंगाई है, कमर तोड़ महंगाई। बताओ जिसके सिर पर आदमी नहीं, अपने बच्चों को कैसे पालन पोषण करेगा इतनी महंगाई में? पहले कहते थे गरीब दाल रोटी खा के गुजारा कर लेता, परंतु अब तो दाल का भाव इतना बढ़ गया कि गरीब वो भी नहीं खा सकता। Well, food prices really started rising significantly from about 2004 onwards. So almost the entire period that the UPA government has been in power. And they started increasing very rapidly from early 2007. Now, when that was happening, people said it's because international prices are rising. But international prices started falling from 2008, the middle, and yet our prices didn't fall. So our prices have been rising almost continuously, and food prices have been rising much faster than all other commodities. In fact, our food price inflation now is about 20%, and the overall wholesale price inflation is only about 2%. Price inflation of essential commodities have knocked down the middle class, but the worst hit is the vast section of urban and rural population in the country, who have no assurance of their employment, no guaranteed fixed income, have little resources and opportunities available, and are already living a life which is below human dignity. 1 लीटर दूध लिए तो कितने चाय बना ले? ज़्यादा से ज़्यादा 10 चाय बना लेंगे। चीनी भी है, पत्ती डालना है, चीनी 25 रुपया किलो हो रहा है, 24 रुपया। पत्ती 250 ग्राम 40 रुपया 35 रुपया का रहा है। क्या किया जाए बताओ? बड़ी बड़ी जो जितने भी उद्योगपति हैं, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, यही अमीर हुए आज तक। 25 साल में आम आदमी को तो रोटी भी नहीं मिली है। जो गरीब है वो तो भूखा ही मर रहा है। अब क्या करें, कर रहे हैं अपने गिर पर के 1-2 कंपनी कर आते हैं, अपने जैसे पैसे ऐसे कम में अपना गुजारा कर रहे हैं। I am confident that we will soon be able to stabilize food price. Our Prime Minister Mr. Manmohan Singh has expressed deep concerns but taken no action so far. On the other hand, Union Agriculture Minister has been ascribing price rise to the increased purchasing power of the people and blaming the Prime Minister-led Central Cabinet Committee for this situation. जो चीनी उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्री ने लाई है रॉ शुगर, वो कांडला में पड़ी है पिछले 2 महीने से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनको प्रोसेस करने के लिए इजाज़त मिल नहीं रही। These blame games and shallow statements are not going to improve the situation. ये सरकार तो बेकार हो गई, ये गरीबों को मार देगी, अमीरों को बढ़ा देगी, बस यही है सरकार। ये गरीब को कोई सुनवाई नहीं होती है। सरकार को सोच ही नहीं रही है। सरकार को सोचने की जरूरत क्या है? उनके तो बच्चे जो है पढ़ रहे हैं अच्छे खासे, उन्हें कुछ फिक्र क्या है? उनके खर्चे अच्छी तरह से चल रहे हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, खर्चे बच्चों के पूरे हो रहे हैं उनके, तो मजदूरों की कौन सुनेगा? I think the most significant thing about government policy is that it has neglected public distribution. And when you do that, that means that there is no alternative available for the consumers to go and find cheap food. And it leaves the field open, therefore, to speculation, to hoarding, and to all that kind of misuse of market power. In addition, we have neglected agriculture, and we have made farming less viable as an activity, so that in fact the soil is less productive and farmers are less able to actually meet the requirements. So although we are officially self-sufficient in food, we're not actually self-sufficient if we want enough food to feed all of our countrymen in adequate numbers. It's very important to have a food security law, because that's the only way to hold government to its promise to provide food security. Otherwise, particular financial pressures, particular political pressures will always win out. So it's important to have a food security law, but it must be universal and it must provide adequate food. राशन की दुकान हटाई थी लोगों ने और 3-4 साल तो राशन ही नहीं दिया, और अब देने लगे हैं तो 20 किलो गेहूँ देते हैं, कुछ भी नहीं देते उसमें। राशन पूरा नहीं देते हैं, पूरा नहीं देते, कहते नहीं 25 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल और 6 किलो चीनी। तेल देता है ना कुछ देता है, और क्यों तो छतरे बातें सुनाता है, आज नहीं खोलता है, सुबह खोलता है, शाम को नहीं खोलता है, ऐसा करता है, पब्लिक को परेशान करते हैं, कहते तुम्हारा गैस है, ये वो है। Now the law that is currently being proposed by the central government is actually a very bad bill, because it would actually worsen food security. It would create more food insecurity. Why is that?
Currently, in 8 state governments, 35 rupees kilos per month is given at 2 rupees a kilo in 8 state governments. What is this law proposing? It is saying we will give 25 kilos per month at 3 rupees a kilo. Now, what that does actually is mean that many of the poor will have to go and buy that additional 10 kilos in the open market. So they will be worse off. We are reducing the amount we give to families, and we're not providing adequate for the non-BPL. The second major flaw of the Act is that it is focused on the below poverty line population, whereas what we really have to do is make it universal. जो कहता सरकार कहती है वो हम कैसे दे देंगे? जाओ सरकार के द्वारा लेवे। माँ पर दफ्तर में कह दी कि इसमें जरूर मिलेगा बेटा, तू जा, तो कहता है कि जा मैं लिख के दे, तू जा, कौन सा तेरा राशन वाला बुला ला जा। हमें चक्कर भी काटना पड़ता है और राशन के जो डीलर वगैरह हैं वो सारा ब्लैक भी करते हैं। कभी मिल गया 4-6 महीने में एक बार, नहीं तो ऐसे कोई खास मिलता नहीं है। अब है ही नहीं, अब बैठे हुए ना 10:30 बजे से बैठे हुए राशन के लिए। चावल नहीं देता, चीनी कह देगा तुम्हारा राशन कार्ड पे चीनी नहीं है। Instead of implementing PDS, central government, insensitive to the needs of the people, is proposing a targeted PDS. We find that all these targeted schemes have two major problems. There are problems of unfair exclusion, that is really poor households don't get it, and there are problems of unjustified inclusion, that is rich people get access. हम कल राशन लेने आए ना, तो हमसे कह रहा है कि 5 किलो ले जाओ, तुम अगली बार लेगी थी 10 किलो। जो औरों को 10 किलो इकट्ठे देता है, क्या हमको नहीं देता कि पूरा राशन जो उसमें लिख रहा है? सब ज्यादा ब्लॉकों में लैंड पर चक्की लग रही है, लैंड पर चक्की लगी हुई है, यहाँ चक्की लगी हुई है प्रताप बाग में, इधर झुग्गियों में चक्की लगी हुई है, वहाँ पे जाता है चीनी सब ब्लैक में जाती है बाहर। अब एक बार तो कहते आएगा देंगे, इतने ब्लैक कर देते हैं राशनों को, क्या करे गरीब इंसान? कभी कहता है 5 तारीख को आओ, कभी कहता है 10 तारीख को आओ। First of all, there has to be a very significant increase in allocation for the public distribution system. That means we have to have a public system of procurement, not just for the major food grains, but also for a range of other food items, vegetable oils, vegetables, etc. We then have to set up a proper distribution network. So fair price shops should be encouraged to be open all the month long, not just on a few days. They should be encouraged to sell other items, not just the essential commodities that they're selling. So they have to be viable. And what is particularly alarming is that some of the richest and fastest growing states in terms of GDP, Maharashtra, Gujarat, etc., they show very bad nutrition indicators. So it's a real failure of policy that we have not made food security one of our essential goals, and we haven't done our development project in a way that would ensure that every citizen has access to enough food. Paradoxically, the UPA government, who claims to be doing wonders for the Aam Aadmi, cannot see the plight of the marginalized when it comes to the issue of price rise, which has a direct impact on the poor of our country.